फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस एक नए अंदाज में। आज हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे एक डिजिटल तरीके से अपने डेस्कटॉप पर, क्योंकि न्यूज़पेपर से पढ़ने में मुझे हो रही थी दिक्कत, तो मैंने डाउनलोड कर लिया न्यूज़पेपर अपने डेस्कटॉप पर। अब हम आराम से न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। ये है यूएस फोर्स बॉम्ब टारगेट्स इन साउथ एंड वेस्ट ऑफ ईरान will be hitting Pickaxe Mountain area pretty soon, says Trump. क्या नाम है इनका? राइटर्स वॉशिंगटन दुबई जुलाई 21। ये न्यूज़ है जुलाई 21 की, दिख रहा है सबको। US President Donald Trump on Tuesday said the US will be hitting the Pickaxe Mountains area located near Iran heavily damaged Natanz uranium enrichment facility pretty soon. Pickaxe Mountain is a heavily fortified site that hosts two deeply burned tunnel complexes that export assess as Bayern, the rich of the most powerful bunker booster bombs in the US arsenal. Full stop. The site is linked to Iran nuclear program. Trump also said that the US would respond if Iran illegit Houthi movement follows through on its threat to impose a blockade on commercial shipping to the Red Sea, saying that if the group take action, the United States will just have to take care of business. But थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं। But the Houthi announcement already appear to be having an impact. Two tankers which have just loaded Saudi crude bound for China and India at Saudi Arabia Red Sea port of Inubu made U-turn on Tuesday, heading toward the Suez Canal rather than out through the Bab el-Mandab in the Indian Ocean. US force bomb target in the south and west of Iran overnight, while Tehran target US site in Bahrain. Kuwait and Jordan, and a tanker was hit in the Strait of Hormuz at the mouth of the Gulf. Iran said it had struck infrastructures belonging to Amazon in Bahrain, where the US tech company operates to regional data center. Amazon did not immediately comment, and Reuters could not verify the report. US Central Command said it had hit
Iranian military command center maritime capabilities, missile and drone launch site and air defense system in its latest round of strikes, which have carried on nightly for more than a week and a half. Explosions were heard around the city of Srinj in southern Iran. State media said Konang and Chabar on the southern coast, the city of Khorramabad, and a civilized site outside the cities of Abdan, both in the West, all come under the TIC media report said. तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वो देखिए फ़ोटो इन दोनों का कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बड़ी ही दुविधा बड़ी न्यूज़ है ये। आप सभी समझ ही गए होंगे क्या लिखा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।